But they really are just solid kids. They don't have an attitude. They're courteous and kind to everybody. They work hard. They don't feel like they're entitled to anything. We can take another break. That is indisputable. Yep. And you have been a great president. And like you said, people can say things over and over and over again about unemployment or the economy or anything else they can. But if you listen to that, you're going to believe it. If you look at and look into it and see what the facts are, it's just not the truth. We're better off now than we were when I came in. You've done There's no an doubt. amazing job. दे आर सॉलिड किड्स. सॉलिड मतलब होता है सख्त, लेकिन सॉलिड मतलब मजबूत भी होता है. किसी की पर्सनैलिटी अगर मजबूत है तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि ही और शी इज़ अ सॉलिड पर्सन. इसी तरह यहाँ पर बराक ओबामा भी अपनी बेटियों के बारे में कह रहा है कि वो बहुत मजबूत बच्चियाँ हैं. They don't have an attitude. They're courteous and kind to everybody. कॉर्टियस का मतलब होता है कि पोलाइट नेचर की, बहुत ही ठंडे नेचर की और इज्जत देने वाली नेचर के शख्स को कॉर्टियस कहते हैं. They work hard. They don't feel like they're entitled to anything. इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार. जैसे कि एज अ सिटीजन आपके कुछ हुकूक होते हैं. एज अ सिटीजन यू आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स. Take another break. That is indisputable. Yep. And you. इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है बेशक, बगैर किसी शक के. बेशक के लिए इंडीड वर्ड का भी इस्तेमाल होता है और इसी के लिए इंडिस्प्यूटेबल का भी मतलब कोई ऐसी बात जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ना हो, जो कि बिल्कुल सही हो और आपको पूरा यकीन हो, तो आप इंडिस्प्यूटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. We're better off now than we were when I came in. You've There's done no an doubt. amazing job. बेटर आप का मतलब होता है बेहतरी. बेहतरी की तरफ जाना या कोई चीज़ पहले से बेहतर हो जाना, उसके लिए बेटर आप का इस्तेमाल होता है. Mr. President, Michelle said she's out of town and she wanted to know, did you make your bed this morning? That would be no. No. And when she's out of town, things get a little slovenly around the house. Socks everywhere, shoes. Have you eaten today and are you taking care of yourself? Did you exercise? I did exercise. I did eat. And I ate healthy, and I had some carrot sticks along with the potato chips. Okay, good. It balances out. Okay, and you took your vitamins and you're all set for dinner and all that, right? I'm all set. All right, good. स्लेवनली का मतलब होता है कि लापरवाह. अपनी सफाई को लेकर या चीज़ों की सफाई को लेकर लापरवाही करने को स्लेवनली कहते हैं. कोई शख्स खुद को या फिर अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखता तो उसे स्लोनली कह सकते हैं. लिटिल स्लोनली का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत बिगड़ जाना, मतलब कि चीज़ें या इंसान खुद सफाई के लिहाज से थोड़ा बिगड़ जाने को स्लोनली कहते हैं. And you're all set for dinner and all that, right? I'm all set. All right, good. आल सेट का मतलब होता है कि सब तैयार है, सब कुछ ठीक है. अगर आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है तो आप कह सकते हैं आई एम ऑल सेट. They really are just solid kids. They don't have an attitude. They're courteous and kind to everybody. They work hard. They don't feel like they're entitled to anything. Well, we have to take another break. That is indisputable. Yep. And when she's out of town, things get a little slovenly around the house. Socks everywhere, shoes. you took your vitamins and you're all set for dinner and all that, right? I'm all set. All right, good.